पेप ग्वार्डियोला ने एक बार कहा था, My first question is always, can this guy dribble? I only want players that can dribble because you can learn control and good passing. Dribbling is the key. आज मैं बात करूंगा about probably the dribbliest player in Europe's top 5 leagues, Adama Traore, जिन्होंने अभी recently Barcelona join किया है. Hello and welcome to the Football Parliament, your one-stop destination for all your football debates, discussions and opinions. ऑनलाइन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बार्सिलोना फैंस जो बहुत नाराज है कि हमने ऐसे प्लेयर को क्यों लिया है जिसके पास कोई खास एंड प्रोडक्ट नहीं है, स्पेशली व्हेन दिस प्लेयर इज अ सेल्फ परसीव्ड विंगर. मेरे हिसाब से ये सोच गलत है क्योंकि फुटबॉल सिर्फ गोल्स एंड असिस्ट के बारे में नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ अडामा सिर्फ ड्रिबल ही करता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ फैंस थिंक दैट ही इज जस्ट अ ड्रिबल मर्चेंट और कुछ आती नहीं उसे. लास्ट 2 सीजन्स में अडामा ट्रायोरे हैज 7.1 एक्सपेक्टेड असिस्ट, लेकिन उसे सिर्फ 2 असिस्ट मिले हैं उसकी क्रिएटिविटी के लिए. ये सीजन थॉमस मुलर के पास 8.5 एक्सपेक्टेड असिस्ट है, लेकिन ही हैज 16 असिस्ट. अगर अडामा के अराउंड जो टीम है वो ऐसी ओवर परफॉर्म करती तो अडामा के पास अराउंड 14 असिस्ट होते ओवर द लास्ट 2 सीजन्स, जो आप और मैं दोनों मान सकते हैं काफी रिस्पेक्टेबल है फॉर अ वाइड प्लेयर. And even if they hadn't overperformed, he would still have 7 assists, which is way better than just having 2. Now, I think I've addressed his main criticism from Barcelona fans, क्या कि उसके पास कोई end product नहीं है. So let's talk about Adama's strengths. And I think everyone can agree that Adama's strengths are his dribbling and his ball carrying ability. अब इसको अगर आप बाकी प्लेयर्स से कंपेयर करोगे तो in Europe's top 5 leagues, he's better than 94% of players at ball carrying. He averages 5.1 completed dribbles per 90 in Europe, जो मेरे I think is the best average among players in the top 5 leagues. And अगर आप उसको गेम सिचुएशन में भी देखोगे, and whenever he receives the ball, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है. He will do something. He will carry the ball. He will take on a man. और जब वो स्टार्ट करता है ड्रिबलिंग करना, उसके बाकी जो टीममेट्स है उनको एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है बिकॉज ही इज ड्रैगिंग प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन एंड ही इज कमिटिंग एक्स्ट्रा मैन फ्रॉम द ऑपोजिशन टू ट्राई एंड टैकल हिम. नाउ इसका मतलब ये होगा कि आवर क्रिएटिव प्लेयर्स, especially players like Pedri, Gavi, Frankie, Jordi Alba, they'll get little bit more space, and this space can mean the difference between a killer pass or just recycling of possession. So if Adama can offer us this, I think this is very important to us. And speaking of importance, Xavi को भी बहुत wingers की बहुत जरूरत है उसके system में. We have seen this. He has tried to put in players like Abde and Dembele, and उसके system में wingers बहुत important है. And we also have to keep in mind that Adama is a La Masia product. So मेरे हिसाब से you should not have any problems to fit into the side and overall dynamics of the team because he is from La Masia. And let's see how Adama can perform in a match situation. अगर मैच में अगर ऐसी सिचुएशन आई तो वो हमें बेनिफिट कैसे कह सकता है. Let's see. जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, this is a kind of a realistic situation in game. यूजुअली बार्सिलोना को ऐसे ही लो ब्लॉक्स के सामने खेलना पड़ता है एंड आप जस्ट पुट प्लेयर्स ऐसे ही जस्ट बाय देयर पोजीशन एंड जस्ट प्रिडिक्टेड पोजीशन, बस ऐसे ही. डोंट टेक द प्लेयर्स एंड देयर पोजीशंस क्वाइट सीरियसली. दिस इज जस्ट फॉर टू एक्सप्लेन हाउ अडामा विल बेनिफिट अस इन अ गेम सिचुएशन. तो अभी आप इमेजिन करो कि अडामा के पास ये राइट विंग पे बॉल है, तो दिस मीन्स दैट ही इज ट्राइंग टू टेक ऑन दिस प्लेयर. सो इफ ही अगर वो ये प्लेयर को ड्रिबल कर लेता है, इफ इज गॉन पास दिस प्लेयर, दैट मीन्स दिस सेंटर बैक हैज टू कमिट एंड so will this center back. This leaves space for our center forward to run into, and Adama can try and take it to the byline where he can cut it across, cut it back for an easy tap in. और अगर ये भी नहीं हुआ तो one of our interiors, that is this player Gavi or Frankie, जहाँ इधर भी label किया है, they can also make a late run into the box
because if this player has gone here, ये player भी उसके साथ आएगा. So this leaves space for this player as well as this left winger who can come inside. So this creates a numerical advantage for Barcelona in the box, in and around the box, and this can result in a lot of goals for us. This is also why Adama was linked with Manchester City a couple of years ago, अगर मुझे याद है ढंग से, because Manchester City also operate in such kind of scenarios where they try to get the ball to the byline and cut it back for their forwards. Now, in another kind of scenario, if Adama has the ball on this right wing, let's highlight him. Yeah. So if he has the ball on this right wing, this means that the entire team has to shift their positions towards the ball, because if they don't, they leave a lot of space in the middle for players like Pedri and Xavi and like these interiors. So if they do shift towards the ball, this will mean that Jordi Alba can make an overlapping run of Depay, and he has a lot of space to either just hold the ball and recycle it, or try to play a pass into one of our forwards, Depay, Aubameyang, जैसे. So this can again create numerical superiorities for us in the box, in and around the box. So जैसे आपने देखा, Adama Traore has a lot of benefits to him. He can carry the ball, he can dribble, he can create width for our other fullback, in especially Jordi Alba, and he can create space for our interior players like our central midfielders and our strikers. So this can only mean, इसका यही मतलब हो सकता है कि हम benefit करेंगे इससे. And even if he doesn't get like goals and assists, that is not what I am expecting from Adama. और मेरे हिसाब से Xavi भी expect नहीं कर रहा है Adama से कि वो आके goals and assists करे. He is here to play a specific role, and I think that he will play that role very well. And speaking financially also, this signing is very smart, because उसकी wage demands बहुत ही ज़्यादा कम है. He is earning like 15K per week, and plus हमें कोई obligation to buy भी नहीं है. तो अगर वो ये रोल को ढंग से फुलफिल भी ना कर पाए, तो हमारे लिए कोई रिस्क नहीं है. So because of these reasons, I think Adama Traore is a great signing for us. To recap, one, he is a great dribbler and a playmaker. And number two, financially, we have no risks involved in this. So that was the video for today, guys. अगर आपको लगता है कि अडामा ऐसे ये रोल फुलफिल नहीं कर पाएगा, या कोई और डिसएग्रीमेंट्स होंगे या डिफरिंग व्यूज होंगे, तो जरूर कमेंट्स पे डालना. And like and subscribe and keep watching the Football Power.